I would just want to warm up and ask all of you, how many of you do budgeting exercise? How many of you do budgeting exercise? On the chat boxes, if you could just write it down, it would be nice. Just preparing for my slideshow, so I hope you don't. Okay. While people joining in. So thank you very much, everybody, for joining in. Today, I'm going to quickly run you through. Uh, I've sent a request for. There you go. Just confirm if you can see my screens. Annual planning and budgeting is a management practice. If you start doing that budgeting, if you start working on it, research and studies shows that those businesses can grow up to 30% year on year. Now, it is your ability to execute and that discipline that we've seen in my consulting practice for last over a decade now. I have seen that businesses have actually reached 100, 10x, from 10 crores to 100 crores in less than 1,000 days gap, right? But this practice has to be understood, and this practice needs to be learned and implemented. So when we're going to talk about how do you plan your business uh, for the next 365 days. So when I say planning, I'm talking about planning and budgeting both. So not just activities, the numerics, the economics behind those activities also need to be planned well. So I'm going to take you through certain aspects of it today, see if it is adding value to you, and do give me your feedback. Uh, First, let me quickly be very clear about who is this workshop for. This is for people who intend to gain investors and bankers confidence. Investors confidence का मतलब मेरी बैंक भी मेरा इन्वेस्टर है या सीधा बैंकर हो सकता है. So people who want to gain confidence in the growth, right, are people who will go through this kind of an activity, or else people will not go. जो चल रहा है वो चल रहा है, चलने दो. Structured growth that gives a better control on the investments that you're doing, your hard-earned investments, your money that you've earned. It gives you control over what kind of investments you should focus on and when should you focus on that. The next is cost control for avoiding all the revenue leakages. वक्त पे डिसीजन ना लेना, ये एक ये रेवेन्यू लीकेज है, और वो रेवेन्यू लीकेज हमें समझ में आना जरूरी है. अगर हम उसे प्लान करते हैं तो उस लीकेज को रोका जा सकता है. People who want to make faster decisions in the growth process, वरना होता क्या है कि decisions delay होने के कारण we do a lot of mistakes, and those mistakes typically are hiring time पे नहीं करना, जो systems time पे लेनी है वो नहीं लेना, investments stocks में ज्यादा कर देना, कोई कोई assuming your business has a season, so you sometimes overbook in the season or underbook in the season, raw material not being available. All of this becomes a challenge because there is no planned activity around it. Resource allocation for CapExes and OpExes. CapEx का मतलब capital expenditure and OpEx का मतलब operational expenditure. CapEx और OpEx को मैप नहीं कर पाते और अगर numbers सामने नहीं है. And second, very important, the next is performance management. हमारे लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है, ये हम समझ नहीं पाते. ओके. और फिर वो हम केपीआई बना दो, केआरए बना दो, बट दैट इज पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी. पार्ट 2 of the story is your planning and budgeting. Okay, execution will happen after you plan and prepare, right? So if you are directly jumping into execution, you would want to take some tools, tips, from YouTube free
or some courses 99, 299 rupees wala courses, and then you take those matrices, you try to apply them, but those are operational matrices. Those are not going to help you if you're not planned and prepared for your growth. नेक्स्ट इज कैश फ्लो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल चाहिए लोगों को, कि यार कैश को सही मैनेज कर पाए, फ्लो सही हो, उन लोगों के लिए ये सेशन है. और लास्ट ऑफ कोर्स बट नॉट द लीस्ट इज गोल सेटिंग फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, मंथ ऑन मंथ जो करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये सेशन है. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन to attend this kind of a conference, attend this kind of a workshop, understand what is budgeting and build that budget? Okay, not just understanding, but building that budget. How many of you interested? Please let me know on a chat box. On a chat box, please let me know how many of you interested in building the budget. Because if you're not interested in building the budget, if you feel okay, ये हमारे लिए नहीं है, then we are absolutely okay even if you leave the webinar. We are absolutely okay if you leave the webinar. Because maybe ऐसा हो सकता है कि subject कुछ ऐसा था कि आपको अच्छा लगा and you wanted to check. But this is a serious, sincere job of building your budgets for the next year. Okay, and if you are able to understand the mechanics of why it has to be done, then you can definitely be a part of it. I have a question back again. How many of you are wanting to build your budget for the next 365 days of the coming year? Okay, it is irrespective whether you are a trading business, project business, whether you are a 10 crores, 20 crores, 100 crores business, whether you are a 2 crores business, it doesn't matter. You still have to have a right management practice, right? धीरे धीरे improve करते करते we can improve. But people who are interested in building their budgets, okay, are people that we are wanting to talk. So quickly on your chat boxes, please write down whether you are wanting to build the budget for yourself. Okay, and if you are not intending to build the budget for yourself, then this is not the session for for you, my friends. Okay, this is not the session for you. So that takes us to the next part of it. Who is this not for? Okay, this is not for people who don't believe in planning. This is not for people who don't believe in structured approach of business. This is not for people who don't believe in structured implementation to gain momentum. क्योंकि momentum आने के लिए एक repetition की जरूरत होती है. People who do not believe in actions and correct practices but are afraid of change. नहीं यार ये बहुत ज्यादा है, करेंगे गिरेंगे, होगा नहीं होगा, right? ऐसे तो धंधा आगे नहीं जाएगा. So people who feel कि जैसा चल रहा है उतना बढ़िया चल रहा है, ये शायद उनके लिए नहीं है, because these management practices will push you to move up. कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो वो स्ट्रक्चर आपको पुश करेगा आगे जाने के लिए. सो इफ यू फील नो दिस इज नॉट व्हाट हु आई एम, मैं थोड़ा रिटायरमेंट वाले मोड में आ गया हूँ, मेरे को ये नहीं करना, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. सी आई एम मेकिंग वेरी वेरी क्लियर बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज वेरी वी हैव मेड 700 plus businesses, 100 crores plus. You understand the numbers I'm talking about. 770 से ज्यादा कंपनीज हैं जो लास्ट 10 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा कर चुकी हैं. Okay, by the right management practices. Okay, now you might want 500 reasons of not doing it, but right management practice is the right management practice. You can avoid it, you can say I don't want to do it, but you can't say that it is not right. Okay, you don't know how to do it, probably could be the reason of why you're not doing it. People who believe that their employees are the reasons of delayed growth, है ना. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर वो हमारा धंधा ग्रो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे लोग काम नहीं करते, सही से काम नहीं करते, तो अपन जुगाड़ लगा के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. दैट्स प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू. राइट टैलेंट विल नॉट वेट विद यू. नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज वी बिलीव दैट ही और शी नोज एवरीथिंग अबाउट बिजनेस. सर मेरे धंधे के बारे में आपको क्या मालूम है टाइप्स, राइट? तो मैं आपको आपके धंधे के बारे में हमसे ज्यादा जरूर मालूम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में शायद आपको कम पता है. इसी वजह से आप इस वेबिनार में हो. अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सारी पता है, अगेन दिस इज नॉट फॉर यू. बिलीव दिस इज ओनली ज्ञान. तो ये भी होता है यार, एक फ्री वेबिनार है, लग जाओ, आ जाओ उसमें एंड सुन लो क्या कह रहा है. अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना डिलीट बटन या स्टॉप बटन या आउट बटन कर लो. इफ यू फील दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक you can drop right now, no problems with that. Okay, and see how many times I am telling you
that if it is not for you, please don't waste your time, neither waste anybody else's time, right? But if it is for you, then listen to it with a lot of sincerity, listen to it whether we can implement, listen to it whether I would want to do this. That kind of a mindset and framework is required to understand all of these things that I'm sharing with you. Believe in that businesses are dependent on external factors. नहीं, वो गवर्नमेंट का रूल ऐसा आ गया, नहीं गवर्नमेंट चेंज हो गई है, उसके इम्पैक्ट है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, उसके इम्पैक्ट है, पर वही इम्पैक्ट है ऐसा नहीं हो सकता. Okay, so see if you are in this zone. Okay, and if you are in this zone, then probably this is not the place for you. But people who feel that this is a place for you, I would give them a tool today. Okay, एक लिंक दूंगा मैं आपको, जो आप भर लीजिए. भरने के बाद मैं आपको करके दिखा दूंगा वो क्या सीन है, किस तरीके से है. वो लिंक आपके पास आ जाएगी. And once you fill it up, you will understand whether you need it, whether you don't need it. Okay. This tool has been created by almost 35, 40 financial consultants sitting together, strategy consultants sitting together, and then the tool has been created. So I'll share that tool with you today. And based on that, make a decision whether you should do this or not. Okay. Now, some disclaimers that, and I always say this: participants who've attended annual planning and budgeting workshop tend to grow around 30 to 100% in their revenues. This planning exercise is the admission fee for the gym. Okay, with discipline and regularities, execution business can go to 10x in less than 3 years. 3 साल में 10x करना is possible. Okay, if one is the belief that I want to do it, and second is the right management practices along with right people who can help you do that. Whether it is the employees, whether it is bankers, vendors, subordinates, whether it is investors, consultants like us, anybody. Okay, a right team needs to be formed, and all of us need to believe that it is possible. If you believe, but because you're the founder of the company, you should be the first person who believe that it is possible. Now that takes us to a simple question. Let me ask you these questions and you could just answer. Do you feel, despite of putting all the efforts, okay, you and your team lose the bearing of the growth? कि तीसरे चौथे पांचवें छठे महीने में 10वें महीने में सर भूल जाते हैं ये सब किया था. ओके, राइट डाउन यस नो, राइट डाउन यस नो क्विकली. ओके, कि क्या हम आप वो बेरिंग मिस कर जाते हैं कि ये करना था या नहीं करना था, उसको ट्रैक भूल जाते हैं, ये होता है क्या? Ask yourself this question. By the time you reach the third quarter, you just miss the entire plan that you've made. है ना? कुछ लोगों के पास तो वो एक तो पहले प्लान नहीं होता. कुछ लोग बाय द टाइम वो दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में पहुंच जाते, चौथा तो छोड़ ही दो, तीसरे क्वार्टर में पहुंच जाते हैं. दे एक्चुअली मिस द गेम, कि पता ही नहीं चलता कि यार ये क्या है करके, क्यों क्यों किया हुआ है, किस तरीके से किया हुआ है. राइट? पीपल लीव अनएक्सपेक्टेड एंड रेवेन्यूज आर एट रिस्क. ओके, अगर ये चैलेंज फेस हो रहा है. ओके, so and hence this today's topic is unseen risk of not building the budget. Okay, not building an annual operating plan and budgeting. Unseen risk, ये दिखाई नहीं देते. जब तक आप इसके डीप में नहीं जाओगे, उसके डीप की प्लानिंग नहीं करोगे, तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी. ऊपर ऊपर से सब कुछ सही लग रहा है क्योंकि खाते में पैसे आ रहे हैं. इज दैट ओके? जब खाते में पैसे नहीं आते तब अपनी पैल्पिटाइजेशन बढ़ती है, पर एंड में जब अपन बैलेंस शीट देखते हैं तो शायद पैसे बचे नहीं होते. Okay, so please realize that while we are doing all of this exercise, it is important for all of us to see the unseen, because ये unseen ही अपना profit खाता है. Okay, this is what we will cover today, basically, and let me quickly move to the first part of it. The first part of budgeting क्यों इतनी जरूरी है और किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए, for a simple reason is because if you are looking to grow, आपको ये 200% पता होगा, बिजनेस कर रहे हैं आप, कि इनोवेशन और जो हमारे पास अभी है, जिसे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहते हैं, उसको करने की सख्त जरूरत होती है. ओके, इफ नई चीज नहीं कर रहे या पुरानी चीज को और बेहतर नहीं कर रहे, तो मार्केट में टिकेंगे नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? जस्ट राइट इट डाउन ऑन द चैट बॉक्स दैट आई अग्री. अगर नई चीज नहीं करेंगे या पुरानी चीज को बेहतर नहीं करेंगे, तो शायद हम मार्केट में नहीं टिकेंगे. राइट? अब इसको देख, और इसका इंपैक्ट, अगर ये प्लानिंग नहीं है तो इसका इंपैक्ट कैसे होता है देखो. आई हैव क्रिएटेड अ XY मैट्रिक्स
I have created a XY matrix. This XY matrix is talking about continuous improvement on my y-axis. If you see my cursor is moving, and innovation on the x-axis. सो अगर मैं 2x2 के मैट्रिक्स में डिवाइड करूं, सो सबसे पहले लो लो ऑन कस्टमर, लो ऑन इनोवेशन एंड लो ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लो ऑन इनोवेशन एंड लो ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये तो डेड बाय स्टूपिडिटी है। आई एम श्योर हम में से कोई भी इस जोन में नहीं होगा कि ना मैं मेरे करंट प्रोडक्ट बेहतर कर रहा हूं, ना मैं नई चीज कोई मार्केट में ला रहा हूं। फिर तो पक्का डूबना है। ओके, पक्का डूबना है, आज नहीं कल डूबना है। राइट, एज सिंपल एज दैट। बट द रेस्ट थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स लुक एट दिस। स्पाइक्स इन प्रॉफिट ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। मतलब प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से या ग्रोथ कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, स्पाइक दिख रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट। उसी पे स्टैग्नेंट है, स्पाइक नहीं दिख रही है, राइट। उसमें उसमें ऊपर नहीं जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो, बस वही, से यू आर मेकिंग अ 10 crores बिजनेस, सो 10 crores में ही खेल रहे हो, मतलब लगभग 70-80 लाख रुपए महीने का, राइट। दैट स्पाइक इज देयर। और मे बी यू आर इन प्रोजेक्ट बिजनेस, तो 4 प्रोजेक्ट कर लिए, 2.5 करोड़ का एक एवरेज प्रोजेक्ट है, साल में 4 प्रोजेक्ट करते हैं, 10 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट इट। इन दिस केस दिस इज प्योरली हैपनिंग बिकॉज इनोवेशन में एक सर्टन डिसिप्लिन की जरूरत होती है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में एक सर्टन डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यहां पे ये नोटिस होता है कि इनोवेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ये सिर्फ ओनर लेके लेके काम कर रहा है। सो ही इज कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग, और ही इज ओनली इनोवेटिंग, पूरी टीम काम नहीं कर रही है उस पर, सिर्फ ओनर नई नई चीजें लेके आता है या पुरानी चीज को बेहतर करने की कोशिश करता है। सो ये वो कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में क्या होगा कि जब आप खुद ही प्रोडक्ट को सही बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो या नया कुछ लाने की कोशिश कर रहे हो, यू विल फील ड्रेन्ड आउट। ओके, एक ड्रेन आउट फील होता है क्योंकि कस्टमर के डिमांड्स नेवर एंडिंग होते हैं। ये ध्यान में रखना, ये जो ग्रीन बॉक्स बीच पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? कस्टमर डिजायर्स और नीड्स चेंज हो रही हैं। आज की जो कस्टमर की डिजायर है वो कल जाके नीड होने वाली है, और कल की नीड जो है वो एब्सोल्यूट होने वाली है। तो इट इज अ रनिंग ट्रेन। उस रनिंग ट्रेन में मैं अकेले कैसे सबको सेटिस्फाई कर पाऊंगा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जहां जहां पे भी वो ओनर ही खुद कर रहा है, वहां पे भी प्रॉफिट में स्पाइक्स दिखाई देते हैं, और प्योरली टीम में लैक ऑफ डिसिप्लिन दिखाई देती है। ओके, लेट्स लुक एट द हाई हाई रेशियो, ओके, विच इज हाई ऑन इंप्रूवमेंट एंड हाई ऑन इनोवेशन। ये बिजनेसेस मार्केट के डिमांड के वेव के अकॉर्डिंग टू चलते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब उनके पास गोल्स होते हैं कि इस साल हम हमारे परचेज प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे, या स्टोर प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे, या कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करेंगे, या परचेज के इसमें 2% घटाएंगे, या प्राइस पॉइंट को 2% बढ़ाएंगे, या नई टेरिटरी खोलेंगे। सो दीज आर सम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड स्टोर्स एंड परचेज एंड ऑल ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स दैट यू हैव, एचआर फॉर दैट मैटर, राइट। सो मेरा हायरिंग प्रोसेस अभी फिलहाल बस मैं एक इंटरव्यू लेके खत्म करता हूं। इस साल हम हायरिंग प्रोसेस थोड़ा ऑटोमेट करेंगे। सो दे आर लुकिंग एट, एंड ये जो थोड़ा करने की आदत है ये टीम्स में होनी चाहिए, आप में नहीं। इफ यू आर अलोन डूइंग इट, देन इट इज नॉट इनोवेशन, माय डियर फ्रेंड्स, देन यू आर ओनली ड्रैगिंग दैट कार्ट अलोन। द लास्ट पार्ट हियर इज हाई ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लो ऑन इनोवेशन। ये वो बिजनेसेस हैं जो कॉस्ट पे खेलते हैं और वैल्यू में नहीं खेलते। कॉस्ट में खेलते हैं, वैल्यू पे नहीं खेलते। अब कॉस्ट पे खेलने का कारण क्या है? कि कांस्टेंट क्या फोकस है कि कोई ड्राइव कर रहा है, कोई ओईएम होगा जिसका सप्लायर मैं हूं, और वो मुझे ड्राइव कर रहा है कि इसमें और घटाओ, और रेट कम करो, और अलग मटेरियल यूज करो, और जल्दी टाइम में दो। तो ये कस्टमर ड्रिवन बिजनेस है। सो ओईएम डिमांड कर रहा है और आप बना रहे हो, आप नया इनोवेशन नहीं ला रहे हो। Okay, so that's what a continuous improvement, high and low on innovation happens. Now if you look at this grid, you will realize कि प्लानिंग और बजटिंग में इसका क्या इतना महत्व है। अगर मैं इन चीजों को क्वाड्रेंट 3 में लाना चाहता हूं, विच इज हाई ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड हाई ऑन इनोवेशन, planning is required according to the market, assuming
मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो शायद मार्केट में डेड होने वाले हैं। कुछ अगले 1-2 साल के प्रोडक्ट्स होंगे या सर्विसेज होंगे या प्रोजेक्ट्स होंगे या इनोवेशन टेक्नोलॉजी होगी जो आने वाली है। अगर मैं उन सारी चीजों को मैपिंग मेरे बजटिंग या सॉरी मेरी प्लानिंग में नहीं करता, देन आई एम ऑलवेज आउट ऑफ द गेम। फिर मैं रिएक्टिव मार्केट में खेलता हूं। अच्छा, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट फॉर बिग कंपनीज, हाँ, दिस इज फॉर कंपनीज लाइक यू एंड मी। इफ यू आर नॉट अहेड ऑफ द मार्केट। अच्छा, अहेड ऑफ द मार्केट रहने का मतलब क्या है? क्या आप जानते हो आपका मार्केट कितना है? क्या आप जानते हो अगले 2 साल में आपके मार्केट में क्या चलने वाला है? क्या आप जानते हो कि सप्लाई चेन में इतना बदलाव आ रहा है? क्या आप जानते हो कि स्टॉक रूम्स में इतना बदलाव आ रहा है? क्या आप जानते हो कि सेलिंग की टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है? मैं जानता हूं, जब मैंने स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप शुरू करी, तो आई यूज्ड टू सिट इन माय कार, गो टू द कस्टमर, टॉक टू हिम, एक्सप्लेन हिम एंड देन गेट द प्रोजेक्ट। टुडे आई डोंट नीड टू। टुडे all of this is happening. There are 100 people on this webinar, 100 people are listening to me. Probably few will say, okay, we would want to do it, 10-20% will come, we are good. So the selling mechanisms are changing. Am I adopting all those selling mechanisms, okay, for my market? Okay, this could be for consulting. This is exactly how education has shifted. This is how exactly how medical has shifted. If you look at banking has shifted. अब आपके क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए बंदा नहीं आता। सो प्लीज रियलाइज कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव का अगर आप हिस्सा नहीं बनोगे, आप उस कर्व के ऊपर नहीं रहोगे, और नहीं रहोगे तो बाय डिफॉल्ट जाना ही है पीछे। सो ये प्रोसेस, इस प्लानिंग के प्रोसेस में आप इन सवालों के जवाब देते हो। ओके, नाउ, hey, how many of you have understood what I'm saying? Just give me a thumbs up or say yes, we've understood the 2 by 2 matrix of continuous improvement and innovation. How is it impacting my growth? फंडामेंटली धंधा क्यों करते हैं? ग्रो करने के लिए और खुश रहने के लिए, राइट? सो इट इज इंपैक्टिंग योर ग्रोथ। व्हाई इट इज इंपैक्टिंग? बिकॉज just let me know that I've understood, because now I have started the content, right? I've started the content, and I want people to understand what we're talking about, right? So this takes us to the next part of it. Okay, what is the next part? Let's look at the next part. The next part is called written processes versus mental processes. Written processes versus mental processes. अब ये सबसे बड़ा लीकेज पॉइंट है, सॉफ्ट लीकेजेस जिसको कहते हैं, जो आपका प्रॉफिट खाता है, सबसे बड़ा। ओके, नाउ रिटन प्रोसेसेस वर्सेस मेंटल प्रोसेसेस, जो लो है, राइट? आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड द कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है, ऐसी जो कंपनी चलती है उसको मैं मजाक मजाक में कहता हूं, ऑन अ लाइटर नोट आई से राम भरोसे इंडस्ट्रीज, राम भरोसे एंटरप्राइज, राम भरोसे प्राइवेट लिमिटेड, और प्रॉब्ली गॉड नोज द नेम। ओके, व्हाई एम आई सेइंग दिस? इट इज राम भरोसे बिकॉज इट इज जेन्युइनली राम भरोसे। ओनर के दिमाग में सारे प्रोसेस है, सर मैं जानता हूँ, सब लोग उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं, दरवाजा हमेशा बिजी रहता है, दीवार जो भी आए, कोई भी आके मंदिर की घंटी बजाए, भगवान को पूछे, भगवान जवाब देते हैं, और एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अगर आप 2-3-4-5 करोड़ के हो तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म चल जाता है। पर जैसे आप इससे बाहर निकलते हो, अगर अगर आपने वो चीज नहीं समझी कि क्यों प्रोसेसेस रिटर्न होने चाहिए, एसओपीज होने चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, तो यू आर ऑल फॉलिंग इनटू द। अब दूसरे लोग क्या है कि हाई मेंटल प्रोसेसेस हैं और रिटर्न लो प्रोसेसेस है। सो रिटर्न प्रोसेस नहीं है सर, पर दिमाग में सारे प्रोसेसेस। ये क्या है? हाई ओनर और एक्सपर्ट डिपेंडेंसी। आपकी कंपनी में अगर कोई डिजाइनर होगा, कोई डिजाइन इंजीनियर होगा, और डिजाइन इंजीनियर अगर स्टैंडर्डाइज डिजाइन नहीं बना रहा, तो वो अपने दिमाग में वो सब चीज लेके निकल जाता है। How many of you agree? Write it down on the chat box. Write down on the chat box कि मेरे पास कोई हुनर वाला आदमी है, कोई सेल्स वाला आदमी होगा, कोई 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 डिजाइन वाला आदमी होगा, कोई स्टॉक्स और परचेज को संभालने वाला 10-15 साल वाला पुराना, और कुछ हो जाता है। अब वो जो निकल जाता है तो तकलीफ मुझे होनी शुरू हो जाती है। तकलीफ क्या होनी शुरू हो जाती है? क्योंकि एक्सपर्टीज चली गई। क्यों? क्योंकि हाई मेंटल डिपेंडेंसी एंड लो रिटर्न डिपेंडेंसी ऑन प्रोसेसेस।
ओके। अब एक तरीका क्या है, तीसरा क्या है, हाई मेंटल, हाई रिटर्न प्रोसेसेस। दिस इज क्वाड्रेंट 3, हाई हाई, राइट। सो यहां पे पावर सेंटर तैयार हो जाते हैं, पावर सेंटर तैयार होते हैं कि रिटर्न प्रोसेस और मेंटल प्रोसेस एक आदमी को मालूम है, पावर सेंटर्स, अगर चार लोग ऐसे हैं तो पावर सेंटर्स तैयार हो जाते हैं कंपनी में। एंड लास्ट इज हाई ऑन रिटर्न प्रोसेसेस, लो ऑन मेंटल प्रोसेसेस। इसके वजह से रिजिडिटी आ जाती है, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। जैसा लिखा है वैसा करो, तो नया कुछ आता ही नहीं है, पहले वाले ग्रिड में आपने समझा होगा। सो इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू चूज इन दैट ईयर विच प्रोसेसेस विल यू पुश। ध्यान तो सब पे रखना है, पर प्रायोरिटी प्रोसेसेस क्या है? क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ये प्रायोरिटी है? कस्टमर रिटेंशन प्रोसेस ये प्रायोरिटी है? क्या द प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स प्रायोरिटी है? क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रायोरिटी है? क्या डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन प्रायोरिटी है? क्या वो चार पांच चीजें हैं जो प्रायोरिटी है? दिस इज पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। बिकॉज ये सारी चीजों के लिए पैसा लगता है दोस्तों। पैसा तो वैसे भी लगना है, सारी चीजों के लिए पैसे लगता है। अब सारी चीजों के लिए अगर पैसे लगने वाले हैं, तो क्या मैं प्रायोरिटी चूज कर पा रहा हूं कि मैं कहां पैसे खर्चे करूंगा? And these are matrices that are being used all across the globe to invest at the right place. Because as a business owner, you are investing your time and energy and money in doing something. So it's very important that you click that. अब बाय डिफॉल्ट, बाय एक्सीडेंट जब क्लिक होता है ना, तो लोगों के दिमाग में थोड़ा चक्कर आना शुरू हो जाता है, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। बट फंडामेंटली योर ग्रोथ हैज टू बी बाय डिजाइन, नॉट बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। इज दैट ओके? We should grow by design and not by chance. Let's move forward and look at what is the next. Now, यहाँ पे क्या करना होता है? If you really look at it, you require team's commitment. So planning और budgeting के एक्टिविटी में जब मैं अपने टीम्स को लेके आता हूं, या मेरे एक आध दो बंदे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तीन बंदे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और बिकॉज वो प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी कमिटमेंट लेवल्स ऊपर आती है। I'll repeat in what I'm saying. Because they are involved in planning process, their commitment levels to the job is far better. Okay. Now, this takes us to the next, this takes us to the next part of it. Okay. This takes us to the next part of it. What is the next part? Let's look at the next part. Okay. Here we're talking about structured learning versus unstructured learning. स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। देखिए कहां कहां पैसे लगाने पड़ेंगे ना बजटिंग करते वक्त। आपके पूरे साल में आपको कहां कहां पैसे जाने वाले हैं, आप ये देखो। आपका पैसा जाने वाला है मार्केट में, सेल्स, मार्केटिंग, सो इनोवेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आपका पैसा जाने वाला है, द नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट दैट आई शेयर्ड विथ यू वाज प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन। और प्रोसेस बढ़िया करने में कोई ईआरपी लेनी पड़ेगी, कोई प्रोसेस राइटर रखना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। आपका पैसा जाने वाला है हायरिंग में। इसके बेसिस पे जब आप हायरिंग प्लान करते हो तो वो हायरिंग बढ़िया होती है, राइट। आपका पैसा खर्चा होने वाला है आपके लोगों को पढ़ाने लिखाने में। अगर पढ़ाने लिखाने का सिलसिला खत्म हो गया तो क्या होता है देखो। लो लो तो सबको समझ में आ गया, हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है, वो वाला हिसाब किताब है। लो 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 स्ट्रक्चर्ड, लो अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता। Let's look at low on structured learning and high on unstructured. Unstructured learning का मतलब क्या है? वो बंदा अपने आप से मेहनत करके कुछ ना कुछ सीखता है और अपने काम को बेहतर करने में के पीछे पड़ा हुआ है। ओके, जैसे आप लोग हो, राइट। वो बंदा जो अपने आप कुछ ना कुछ करके लगा पड़ा है कुछ करने के लिए, जो आप लोग। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का प्रॉब्लम क्या है? जब मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करता हूं, तब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईगो आ जाता है मुझ में भी, क्योंकि मुझे वो ज्ञान अपना लगता है। नया जब कोई चीज मुझे कोई बता रहा है, तो मैं उसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग में मैंने बहुत मेहनत करी है वो समझने के लिए, अब मुझसे वो छूटता नहीं।
experience based learning which goes out of the company as competition or competitor. जब ये बंदे बाहर निकलते हैं तो ये आपके कंपटीशन के पास जाते हैं या आपका कॉम्पिटिटर बनते हैं। आपको फीलिंग क्या है, मैंने इसको सिखाया। उसको फीलिंग क्या है, मैंने खुद होके सीखा है। How many of you have faced these challenges? Please let me know. Please write it down. अगर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है तो मेरे पास एक लर्निंग का प्रोसेस है। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, परफॉर्म करते हैं, रहते हैं, परफॉर्म नहीं करते, निकल जाते हैं, राइट। एंड इन द प्रोसेस यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग बेटर लीडर्स। सो इसीलिए आप वॉट एवर आपके पास 1 रुपया है तो उस 1 रुपये का 10 पैसा पढ़ाई लिखाई में उनके खिलाइए, क्योंकि जितना वो पढ़ाई लिखाई करेंगे उतना जब तक वो है तब तक वो आपका असेट बन के रहेंगे। हाई ऑन अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग और हाई ऑन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब क्या है, बंदा ओनरशिप लेके, रिस्क लेके अपना काम करना चाहता है। सो पढ़ाई लिखाई भी लेता है, करता है, ओनरशिप भी लेता है। सो कॉम्पिटेंट लीडरशिप की पाइपलाइन तैयार होती है अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है और आपने उन्हें एनवायरनमेंट दिया है नए चैलेंजेस उठाने का। द लास्ट पीस इज आई नो बट डोंट नो हाउ टू। इसका मतलब क्या है कि मैं जानता हूं, ये वो बंदे हैं जो बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। जो बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। नीचे वाले क्वाड्रेंट 1 में कौन है, लो में, हम सब जानते हैं वो वाले लोग। लो ऑन लो ऑन स्ट्रक्चर्ड, हाई ऑन अनस्ट्रक्चर्ड में कौन है, एक्सपीरियंस बेस्ड, अपनी मेहनत से, अपने लगन से काम करने वाले लोग। उनसे जल्दी ज्यादा छूटता नहीं है, फटाफट। हाई कॉम्पिटेंसी स्ट्रक्चर्ड भी है, मेरी संस्था में मुझे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी मिलती है और मेरे को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि मैं नई नई चीज करूं। ये लीडर्स के कैटेगरी में तैयार हो जाते हैं लोग। अब इसके लिए भी पैसे लगेंगे। हम इसको क्यों खर्चा समझते हैं, क्योंकि कभी इसको प्लान ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कि भाई एक आदमी को पढ़ा, एक वर्कर को पढ़ाने लिखाने के लिए कितना बजट होना चाहिए। कभी सोचा है आपने? यस और नो? जस्ट राइट डाउन, राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स। एक वर्कर को पढ़ाने के लिए, एक लीडर मेरी संस्था में, मैं बोलता हूँ ये मेरा आदमी लीडर है, मैं कितना पैसा इस पे लगाऊं, मैं मतलब संस्था इस पे कितना पैसा लगाएगी ताकि वो और आगे जाए। किसी ने सोचा है कभी? राइट इट डाउन ऑन द चैट बॉक्स, इट विल बी वेरी नाइस इफ यू राइट इट डाउन। Somebody is asking me, so which quadrant we should be in? Okay, maybe it's an old question, right? And because it's an old question, I really don't know where to, because if you've not thought over it, so this requires planning again and commitment from the team. क्यों? क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूं, ये टीम से कमिटमेंट है। अच्छा, कब आएगा? आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, पहले दिन से पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है? नहीं, जब तक वो उधर रोज नहीं जाता, रोज नहीं होता, राइट। आप भी तो कमिटमेंट वैसे ही देते हो पढ़ाई लिखाई के लिए। आस्क योर सेल्फ। एंड द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, नो। आप जो हरकत एज ए लीडर कर रहे हो उसी की तरह लोग भी कर रहे हैं। सो इट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड कमिटमेंट। The last word that I don't want to miss is called discipline once it is planned. Now, पैसे कहाँ कहाँ खर्चे होने, पढ़ाई लिखाई में, इनोवेशन में, प्रोसेस में, राइट। हम प्लानिंग बजटिंग मतलब सिर्फ नंबर नहीं डालना है दोस्तों कि मैं इतना सेल करूंगा, इतना ये करूंगा, इतना वो करूंगा। वो करने के लिए जो कुछ प्लानिंग करनी है, जो कुछ एक्शंस लेने हैं, वो क्या है, वो जब तक लिखते नहीं है तब तक उस बजट का कोई महत्व नहीं है। ओके, वो सिर्फ नंबर से, वो छूटते इसीलिए है क्योंकि बजटिंग तो कर ली पर प्लानिंग नहीं करी। और प्लानिंग भी करते हैं तो इतना ऊपर, आई हैव सीन पीपल प्लानिंग, इतना ऊपर ऊपर से प्लानिंग, इस बार इतना सेल होगा, इतना स्टॉक लगेगा, इतने लोग लगेंगे, 2-4 लोग लगेंगे, मेरे को 5 लोग लगेंगे, इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। बट माई फ्रेंड्स, वेक अप। देर आर बेटर मेथड्स which are been there for last 100 years. Budgeting is not a new thing that annual planning is not a new thing that is happening. In SMEs we don't do. That's the problem. Okay. आप एक, आपके कोई दोस्त भाई बंधु जो भी होंगे, किसी प्रेसिडेंट वेसिडेंट
किसी कंपनी में होंगे, जनरल मैनेजर किसी कंपनी में होंगे, उनको बस फोन करके पूछ लेना कि यार अभी कौन सा मौसम चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारी कंपनी में, वो बाद में बोलेगा हमारे कंपनी का प्लानिंग चालू हो गया। अब आप सुन तो लेते हो पर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि संस्था ही नहीं है, पूरी कंट्री में ऐसी संस्था नहीं है जो आपके लिए ये काम करवा के दे सकती है आपके साथ। पढ़ाएगी नहीं, करेगी आपके साथ, और आपका बजट बिल्ड करके दे पूरी। आई कैन गारंटी दिस, दिस इज द 6th year एंड पीपल हैव नॉट बीन एबल टू रेप्लिकेट अस। We got awarded from the MSME Ministry of the country. We got awarded from the SIDBI for doing such an activity, that you're ensuring that businesses are getting more structured, right? So how many of you would want to be a part of this? Because I would love to explain to people when people come in Aram, and I'll give you the tool. Okay, I'll give you the tool. People who are coming today, people who are registering right now. Okay, I'll give you the tool. Okay, right away. Okay, right away. For people who will register right now, I'll give you the tool right away. So, but you have to commit. I'll show you the tool right now of how, so that you understand कि मेरे numbers किधर है, क्या कह रहे हैं numbers. Okay. That takes us to the next part of it, and this is called competence versus loyalty. अब ये लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक पहले क्या बात करी, लोगों के पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करी, अब लोगों के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, मेरी काम करने की क्षमता और कुशलता। लॉयल्टी का मतलब क्या है, मेरा मेरे संस्था के प्रति, संस्था के मालिक के प्रति नहीं, मेरी मेरे संस्था के प्रति की आस्था। आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग। लॉयल्टी का मतलब लॉयल्टी नॉट टुवर्ड्स द मैन बट द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाट लॉयल्टी इज ऑल अबाउट। कॉम्पिटेंस ऑफ डूइंग माई जॉब इन द राइट स्पिरिट। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट नाउ? लो कॉम्पिटेंस, लो लॉयल्टी, इनको तो बोल दो प्यार से, इट वॉज प्लेजर डूइंग बिजनेस विथ यू। कल के जाए आज के जाए। ओके, और हम ये कड़क डिसीजन ले नहीं पाते, ये नुकसान है, ये नुकसान है। ओके, लो ऑन कॉम्पिटेंस, हाई ऑन लॉयल्टी, गिव देम अ पोजीशन दैट इज नॉट डायरेक्टली हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी। 10-15 साल से बंदा अपने साथ है, शायद इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है उसकी, पहले अपने लिए प्रोक्योरमेंट करता था, पर अभी ईआरपी आ गया, ये आ गया, तो वो डिफिकल्टी हो रही है उसको सब करने के लिए। ऐसा काम दो, ऐसा काम दो जो वो सहज तरीके से कर पाए और डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा। इसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत है, कल जाके तो उठ के नहीं बोल सकते। हाई ऑन कॉम्पिटेंस, हाई ऑन लॉयल्टी, एम्पावर देम, उनको डिसीजन लेने की ताकत दो। इन लोगों को आपके प्लानिंग और बजटिंग के एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, जो कॉम्पिटेंट भी है, लॉयल भी है, ताकि आपके साथ मिल के जुड़ के काम करें। आप बार बार कहते हो ना कि लोग हम हमारे साथ जुड़ने चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए, मिल के काम करें तो धंधा बड़ा हो। ये है वो लोग। अगर उनको इन्वॉल्व नहीं करोगे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में, अगर उनको भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि संस्था के साथ मैं भी आगे जा रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट वो भी क्वाड्रेंट 2 में जाएंगे या क्वाड्रेंट 4 में जाएंगे, विच इज हाई कॉम्पिटेंस और लो लॉयल्टी। इसका मतलब क्या होगा, फिर लोग क्या बोलते हैं कि सर हमारी कंपनी जो है ना, ट्रेनिंग कोचिंग क्लास बन गई है। आते हैं, 1 साल रुकते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, 1 साल रुकते हैं, निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई ग्रोथ पाथ नहीं है, उसकी कोई एंगेजमेंट नहीं है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके संस्था के सक्सेस में। जिस दिन आदमी को ये लगना शुरू हो जाता है, उस दिन हाई कॉम्पिटेंट वाला आदमी आपकी संस्था में नहीं रुकेगा। इसको भी प्लानिंग की जरूरत है कि क्या मैं एंगेजमेंट की एक्टिविटीज करूंगा, रिटेंशन के लिए क्या करूंगा, क्या पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा। ऑल ऑफ दिस इज अ प्लान, दिस इज ऑल द प्लानिंग दैट वी मिस इन आवर एनुअल प्लानिंग। Okay. Now that takes us to the what is required. Planned delegation, development and empowerment is required. Planned कि इस साल 2 लोगों के प्रमोशन होने वाले हैं, तो उनका पगार भी बढ़ेगा, तो वो बजट में चाहिए। या 10 लोग का पगार बढ़ने वाला है, तो ये 10 लोग का पगार बढ़ना है, तो ये भी प्लानिंग में चाहिए। डेलीगेशन भी चाहिए। नहीं, तू मैनेजर है और डिसीजन आप ही ले रहे हो, तो वो वाला हो गया ना, सांप को विदाउट विश, वो सांप है, मतलब शेर क्या काम का अगर उसके मुंह में दांत नहीं है। That's how delegation is, right? Delegation without empowerment is stupidity, right? And the last piece is development. So all of this is money involved into it, क्योंकि रॉ मटेरियल में खर्चा सीधा दिखता है, फर्नीचर खरीदते खर्चा सीधा दिखता है, तो वो हम प्लान कर पाते हैं दोस्तों।
पर बिकॉज इन सारी चीजों का हम कॉस्ट ही नहीं लेते। अब कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं जो बजटिंग में हम बताते हैं सर हमारी इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए। वी हैव बिल्ड ओवर द लास्ट 6 years इन एवरी इंडस्ट्री क्या थम रूल्स होने चाहिए, वी हैव ऑलरेडी बिल्ड फॉर यू। सो वी विल गिव यू द राइट थम रूल। ओके, विल गिव यू द राइट थंब रूल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मैन पावर का कॉस्ट कितना होना चाहिए, मेरे मेरे ट्रेनिंग का कॉस्ट कितना होना चाहिए, मेरे प्रोसेस डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, मैं किस तरीके से मैं पैट को सिक्योर करूं, पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को सिक्योर करूं। क्यों वो 7 8 10% के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, तो आपका बिजनेस फंडेबल बिजनेस ही नहीं बनता। ये सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड बात होगी, जहां पे आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ काम कर पाओगे, डिजिटली एंड इन द वर्कशॉप। नाउ दैट इज टेकिंग मी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ इट, of this activity today, which is called, and then I'll explain all of this. Okay, uh, calendar activities, calendar activities versus progress. Okay. Yes, yes, Anujit, it is right. Mr. Anujit Bhattacharya, yes, it is right. Uh, Investment on people is the key, and the cost and that planning needs to be there for sure. Right? So, calendar activities and progress check. अब कैलेंडर एक्टिविटीज क्या है, क्या मेरी मेरी रिव्यूज प्लान है, क्या क्या मेरी ट्रेनिंग्स प्लान है, क्या क्या मेरी डिलीवरीज प्लान है, क्या क्या मेरा परचेज प्लान है, क्या क्या मेरा फाइनेंस के सारे जो कंप्लायंसेस होते हैं वो प्लान है, क्या क्या कैलेंडराइज तरीके से जिंदगी चल रही है कंपनी की कि नहीं। या प्रोग्रेस चेक, प्रोग्रेस चेक कभी भी उठ के कर रहा हूं क्या, सो लो लो प्रोग्रेस चेक एंड लो कैलेंडराइज एक्टिविटीज, इट इज लाइक हेडलेस चिकन, द कंपनी इज रनिंग लाइक हेडलेस चिकन। ओके, लो ऑन कैलेंडर्स एंड हाई ऑन प्रोग्रेस। लोग सवाल का जवाब देने में डरते हैं, लोग सवाल का जवाब देने में डरते हैं। ओके, देन देर इज हाई ऑन कैलेंडर एंड हाई ऑन प्रोग्रेस, people and teams are focused to do the job, and high on calendar and low on progress, long meetings with no results. Now the question here is, what do you need to do? Again, the same thing, planned delegation, development and empowerment with a lot of education of how structure has to be implemented. Okay, during a consulting processes, ये हमारे लिए सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम है कि हमें ये प्रोसेस बिठाना पड़ता है कि कैलेंडर और प्रोग्रेस को डेली चेक कैसे करना, वीकली चेक कैसे करना, और उस पर डेवलपमेंटल प्लान कैसे बनाने, क्योंकि लोगों को इसकी आदत नहीं है। लोगों को सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता, कोई मुझसे सवाल पूछे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पर अगर पूछने का ढंग बदल दिया जाए, अगर पूछने के वक्त उस इंसान को ये लगे कि ये मैं डेवलप हो रहा हूं, फिर वो पूछने का सिलसिला चेंज हो जाता है, फिर वो इंसान खुद से जवाब देना शुरू करता है। I'm sure as business owners and as parents, when you just change the way you asking questions, you see the magic happening with your kids also, right? So my humble request to all of you here is, let's understand how this is to be done. Okay. Now, guys, we take you through 21 different considerations of budget. Okay. What are those? And I'll share with all of you what those budget considerations are. But before I share that with you, I want you to take, I want you to have a look at the complete program of how it's going to happen. For this year, Burning Desire digital batch, I'm right now conducting 331st batch digitally. 332nd batch is getting launched on 10th to 15th of Jan. The next piece of this is 16th to 22nd of Jan. 16th to 22nd of Jan. Okay. दिस इज प्री बजटिंग सेशन, जहां पे हम आपको बजटिंग टेम्पलेट कैसे भरना, सोचना कैसे है, प्लानिंग कैसी करनी है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नंबर्स को देखना है, कहाँ पे आपका धंधा है, किस तरीके से आपने मार्केट में जाना चाहिए, क्या एजुकेशन पे लगाना चाहिए, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट वी हेल्प यू बिल्ड. Once that is done, on 19th and 20th of February, in a physical workshop, 19th and 20th of February, in a physical workshop,
The workshop is going to be in Pune. You meet us to validate all the budgets. On 10th of March, there is a digital live follow-up that we do with people of how they have filled the budget, have they cascaded. हम बताते भी हैं आपके लोगों को कैसे आपके लोगों को बजट बताना है. ये एक्टिविटी आप 10-12 तारीख से तक कंप्लीट कर लो. And then on 10th of April, the second follow-up will happen. So this is the journey, my dear friends. Okay, this is the journey. For people who have already attended Burning Desire, okay, your journey will start from 16th of January. For people who have not attended Burning Desire, which is a visioning and missioning exercise, okay, if you've not done that, then your journey starts from 10th to 10th January. If you have done that, your journey starts from 16th January. Now, if you look at it, this is how the entire journey is going to be. Now, I'm going to show you a tool of how you can build your financial dashboard. You can build and look at how the budgets have to be looked at. Are you okay? Let's look at this simple tool that you will get immediately, okay, for people who will register. I have still not told you what is the investments that you will do, but people who will register right now live, I will share the QR code. I will personally do this assessment for you and send the report. Okay, here you go. Just give me a moment. Please confirm if you can see my screens. Please confirm if you can see my screens on your chat box right now. Okay, fantastic. Thank you very much. Okay. Now say company's name. Company's name is, say, sorry. I'm just putting hypothetical name, Yogesh Pawar and company. And industry that I am in, ये अलग-अलग industries हैं. Have a look at this. I'm in pharmaceutical industries. Okay. Pharmaceutical में मेरी team size लगभग 51 से लेके 250 लोगों तक है. Of course, this is my email ID, so I'm just putting it this email ID. I'll start the assessment. Okay. Now, once I do this assessment, there's a report that is getting generated of where your financial status is. Okay. Just give me a moment. It's coming up. Yeah. So this is a small assessment. Let's look at this. Is the leadership team tracking cash flow effectively to avoid surprises? Somewhat. Are the profit margins strong with clear focus on boosting profitability? Maybe not sure. I'm just writing down this. Okay. Are financial forecast up to date and guiding key decisions? Yes. Is the billing collection streamlined and with minimal overdues? Say somewhat. Okay. Sales to expense ratio are maintained healthy balance? No. Does the company have sufficient capital for growth and expansion investment? Say somewhat. Is your budgeting process effectively prioritizing high margin products and services? Say yes. Do you have updated budget strategy that effectively controls unnecessary cost? Maybe not sure. Does your company adequately support innovation and market expansion? Maybe somewhat. Are costs monitored regularly with effective controls to prevent overruns, which means reviews regular हो रहे हैं क्या? Is the budget business self-sustaining or it is overly dependent on external funding? No. Is your company prepared to handle unexpected financial shocks? Maybe no, not sure. Are department budgets aligned to the overall budgets? Somewhat. Do you have clear visibility of your operating cost? Somewhat. So I'm just writing yes now because I've done somewhat. Okay. And
Are you leveraging accurate financial data for decision making? Number decision making जो हो रहा है वो number. Now just submit this assessment. Now this is what is coming up. Oh, I'm sorry. This is what is coming up. Let's look at the entire report. Okay. Now, if you see, what is this? What is it talking about? It is giving me my overall health of the business. Okay. It is also telling me that the 25% of I'm in the 25% region of the industry that I have. Health status of my business is average. Performance category, according to what I'm budgeting, is just 56%, which means this business needs to be at least moving up to 80-85%. इसका मतलब प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत है. कैपिटल इज डिप्लीटिंग. शायद क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे नो कर दिया था और ये एल्गोरिथम सेट हुआ है. मैंने नो कर दिया था क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता मेरे रिव्यूज पे मैं पैसा लाने के लिए. सो इट इज टेलिंग मी कि कैपिटल पे इंपैक्ट क्या आएगा, कैश फ्लो पे इंपैक्ट क्या आएगा ये बता रहा है, विच मीन्स माई कैश फ्लो इज जस्ट 50%. हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन. एफिशिएंसी है टीम में, प्लानिंग कर रहे हैं पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं. प्रॉफिटेबिलिटी इज अराउंड 12.5% और स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन आर जस्ट 50%. इसका मतलब अगर 10 चीजें प्लान करता हूं तो सिर्फ 5 ही एग्जीक्यूट कर पाता हूं. राइट. It will also give you, this is a pie, it will also give you what all you need to do in this year's planning. I don't know how many of you have understood. There are more than 20 recommendations. It tells you how to plan for this year. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखो, कह रहा है कि यार प्राइसिंग में कुछ बदलाव किया जा सकता है क्या. प्रॉफिट मार्जिन के प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करेंगे वो पूछ रहा है. इंप्लीमेंट कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव क्या हो सकता है. कौन से वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इंक्लूडिंग लोग निकालने पड़ेंगे, शायद वो स्टॉक निकालना पड़ेगा शायद. कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट बाय सेगमेंट देख रहे हैं क्या. वीकली कैश फ्लो फोरकास्ट आ रहा है क्या. तो वीकली मेरे को कैश फ्लो समझ में आया ऐसा क्या मैकेनिज्म लगाऊं मैं. सो लुक एट हाउ इट इज हेल्पिंग यू टू प्लान योर ईयर. How many of you would want to have access to this tool? Quickly let me know. How many of you would want to have access to this tool? How many of you would want to have access to this tool? Quickly, okay? Because yeah, and let me tell you the tools that we are going to give you in the entire process, okay? But they are all been so much of data into it has gone for last 11 years, okay? That our algorithms are really sharp, okay? And you will get access to a lot of things. And what are the lot of things? I'll tell you. One, the first is your own customized persona-based AI, which will talk to you only on your business. Okay, so a lot of things will come your way as you're moving in this, but I want people to make sure that you are able to make decisions. Okay, because fundamentally, as I told you, game is all about decision making, right? So I'm going to share with all of you. Just give me a moment. I'm going to share with you the RM. The RM brochure. Just confirm if you can see this. I'm assuming you're not able to see this because it is showing that you can't. Give me a moment, please. Yeah.
Just confirm if you can see the screens now. Yeah, thank you. Now, if you notice, I was talking about who should sit in RM, who are the right people, business owners, their teams, and their family members, whoever you feel is the right are the right people. Okay. I have explained about all of these things. I'll just quickly tell you the workshop highlights. Uh, Target participants are people like you. Interactive budget sessions where 300, 400 people will be sitting together. The pre-budgeting sessions will help you to build all the budget, required numbers and planning. On the day of workshop, you keep and validate. Every table will have a chartered accountant. So if there are 50 tables, there'll be 50 chartered accountants. If there are 40 tables, there'll be 40 chartered accountants who will sit with you to make small nuances and changes that are supposed to be made. Expert guidance would be given to you by consultants like me, or better than me for that matter. Also, live conversations will happen with the MSc, with the NSC and BSc heads, and you can interact with them. There's a conversation between debt and equity. Okay, 30 plus chartered accountants, cost management accountants to support the whole process. Hybrid model where digital live and physical things are going to happen. There are also sessions for people who are going to stay in the property. So of course, stay is not included in it. You can choose the place that you want. The event is going to happen in Pune, so you can choose the way you want to. You can plan it well in advance because it's 19th and February. You have enough time for planning and lessons, learn from failures. So the businesses who have grown to 100, 200, 500 crores, those people will talk to you about how and what decisions that they make which did not go right for them. Okay. Now, that takes us, what are the actionables? 40 plus SME experts, 40 plus business experts, which is chartered accountants, 10 days digital live sessions for filling your budgets, 2-day live conference. Budget validation will happen. We are also doing separate small sessions in snippets of high performing teams, uh, budget building or business budget building, building execution discipline, uh, having discussions with top diplomats. Last, of course, the truths and failures, and the customizable template according to business needs of your business parameters are also going to be given to you. 19th and 20th, 9 to 6 is the workshop, 90 minutes every day, digital for 10 days. Uh, who all can sit? I've already shared your finance manager along with you, your human resource along with you. अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है और आपके बजट में सही आ रहा है तो आप बैठिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है. Okay, RM execution, these are the budget mentors for you. They're classy, experienced people who have done this job for a lot of times and will help you to build that off very nicely. These are the chartered accountants team. I have already explained day by day. Now, here you go. This is the QR code, and the link is coming to you on the all right. The access today is going to be, it's going to be sold at 20,000 rupees only, but the tool access will come to you, okay, if you register right now on the webinar, okay? And there is also a booking amount that you can put in, okay? And you can use that. So that's not a problem. So here is the link. Go ahead. The moment my team confirms that, sir, we've received the booking amount or the full amount, which is 20,000 plus GST, okay, I will give you access to that tool immediately. Okay, my team will send you a WhatsApp or email immediately after this discussion. So go ahead. Now, please remember, while I'm discussing all of this, मैं खुला challenge देके बताता हूँ लोगों को. I mean, this is, I don't want to become a salesman, but there's no harm in becoming one if I'm doing the right job. I can tell you across the country, अगर कोई आपको 20,000 रुपए में आपका साल का बजट बना के दे दें, तो मैं आपको उसके 10 गुना पैसे वापस दूंगा. 20,000 रुपए में इतना एंगेजमेंट करके सही तरीके से आपका बजट बना के दे दे, आई विल गिव यू 10 times more money. We have cracked the code. We know how to do it. We've been doing for the last 6 years.
Okay, and we have benefited out of it, right? So I want the team to showcase certain. I'll stop sharing. I'll share certain case studies and certain testimonies with all of you for people who have attended RM and what they talk about it. Give me 30 seconds, and while you are going through this, I'm sharing with you the videos. फर्स्ट टाइम दिल की बात बोल रहा हूँ. I've experienced that somebody from home only is guiding us. First time I've seen from my side, I can trust all of you guys to 120. Again, normally what happens is whatever we learn does not 100% percolate down. I'll try to percolate them down to a clear concept. Thank you very much. Thank you. There are three benefits that I have seen. One is better utilization of resources. Number two, higher profitability. Okay. And third is less wastage. There are three benefits. There are still, I'm just sharing this with you in a moment. Hi, my name is Prajakta and I am from Puja Engineers. Now, if you look at it, this is what is happening. People are 100% involved. So as I mentioned, this is not a training program. This is a program where people come in, learn, and implement it. Okay, so there was no voice. Somebody said there's no voice, but people who are intending to look at that access will go ahead and register it today. And thank you very much. Please talk to my teams if you have any questions. I've already informed them that people who register today will get an access to that tool and also the business validation tool. So my teams will help you understand that, how the report will be generated. Make sure you take the benefit of this
because in order to get these kind of reports, बैंक आपसे आपके लोन के लिए, आप जब लोन लेते हो आपके एनालिसिस करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, तब आप ही से कम 50,000 1 लाख रुपए लेते हैं. So don't miss this opportunity. Please utilize this opportunity for today only. Thank you very much, everybody.